because crayon can turn into lipstick. My mom is gonna shout at me if she sees me doing these things. Y'all should try these, guys. Hello everyone, मी तुमची मराठी मुलगी राजलक्ष्मी गोने and I welcome you guys to my channel. So today's video is most exciting video that I am gonna share with y'all a makeup hacks that I usually do, and this was requested by Sibel and Khushi. Thank you so much. So here I am gonna show you all what I usually use my makeup hacks as. And if you like any of the makeup hacks that I have done it right now, please try it on yourself also, and don't forget to tag me on my Instagram account, which is sweetiegone5. I will also link in the description down below, so y'all can go there and follow me there, and also DM me whichever videos y'all want me to see doing next. And please subscribe to my channel, you guys watch my videos but do not subscribe it. Please karo, please. And yeah, so let's just not talk too much and get into the video. So I'm wearing no makeup right now, I'm just wearing a basic one. Okay, the foundation and all, मैंने वो वीडियो किया है कि मैंने फाउंडेशन कैसे अप्लाई किया है, and you will be watching that video. So the first step I'm gonna use is a moisturizer. That I'm using sunscreen. Apply sunscreen all over your face. Apply it very properly. And today's steps are going to be quite different because it's all about makeup hacks. But trust me, you guys, this is going to give you the best makeup foundation look. And now I'm going to apply is loose powder. Same way, apply it all over your face. And trust me, you guys, this is going to give you the best foundation flawless look on your face. You must try this out. And as you are done with the powder, I'm gonna use this setting spray. I'm gonna spray all over my face and I'm gonna let it dry for some time. So as it is dried, I'm gonna use this foundation. Using Beauty Blender, I'm gonna spray. I'm not gonna use water, but I'm gonna use spray. So I'm gonna show you half face with the Beauty Blender. Just dab all over your face. And the second part I'm gonna use is the best other blender, that is balloon. Yeah, you guys, trust me, this worked really very good. Just amazing it is. And I really want you guys to try this hack out. Put your foundation over it and with the help of your finger apply it on your face, and just dab the way you dab with the Beauty Blender. And you guys, I honestly telling you guys, is the best way you can do it. So yeah. Okay, so I have done my foundation and मैंने थोड़ा आई शेडो भी लगाया है, brown one. So that is the basic one. मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है. The next thing I'm gonna use is blush. Now whatever the thing is remaining, that everything I'm gonna do in a way of hacks. So for the blush, you don't really need to buy different kind of blushes, because I feel like wasting money on blush is not kind of worth. I usually do is जो भी मैं आई शेडो या लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, मैं उसका ही blush यूज़ कर लेती हूँ. And I guess many of the girls do this, so I'm gonna show you how I do it by my eyeshadow palette. So I have this 12 colors eyeshadow palette I had showed you in my previous video. If you haven't watched my affordable price of makeup, so please go and give it a watch. So the thing is, I'm gonna do is this blush, because I like some, थोड़ा red वाला मेरे को अच्छा लगता है, peach red होता है वो. So I'm gonna do that, and I'm gonna even show अगर वो ज़्यादा हो गया तो how I blend it with what. I'm gonna take this. First I'm just gonna apply it. ऐसे लूँगी मैं.
ज़्यादा नहीं आता इस पर, बस थोड़ा आएगा. तो what I do is I just dab this. And whenever you're doing a blush thing, so please apply like this and not like this. Okay, so this is the blush thing I've applied. Same thing I'm gonna do on the same other side. I'm gonna take it on my nose also. So you can see this side में कुछ ज़्यादा apply हो गया, right? See, it looks really joker. So what I'm gonna do is I'm gonna take this beauty blender. I'm gonna spray a little makeup fixer on this. Okay, and I'm just gonna dab. ऐसे कुछ ज़्यादा जो लगा है वो मैं ऐसे निकालूंगी. I'm watching here because I'm not using a mirror, so I'll just dab it. So this is how I usually do. See, now it's not looking too much on my face, right? This is how I do the blush part. So blush is done. I'm gonna show you how I'm gonna do my highlighter. But for highlighter मैं ब्रश पर्टिकुलर ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं यूज़ करूँगी ये ब्रश जो कि हाइलाइटर के लिए है नहीं. तो मैं इसका कुछ जुगाड़ करूँगी. इट्स जस्ट लाइक यू नीड दिस हेयर क्लिप, और इसको मैं इनके बीच में डालूँगी ऐसे. सो दिस इज़ हाउ आई एम गोना पुट इट इनसाइड. तो ये कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है, तो आई एम गोना टेक माई हाइलाइटर. सी, so this is how I do my highlighter when I don't have brush. Also I don't use a particular brush for highlighter because अगर इससे काम चल जाता है तो why to buy something else, right? जो भी आपके पास है आप उसी से काम चला सकते हो. So like the way I did this, you all can also try it and see if that works for you. I did my highlight. अभी हमने सब कुछ तो कर लिया, ठीक है, पर मैंने आई मेकअप किया नहीं है. So for the eye makeup now, if I do it, उसका डस्ट नीचे आ जाएगा. So what I'm gonna do is, there are two things you all can do. First, one thing is like you have that loose powder का जो sponge आता है, even you all can use that. Powder है आप सब निकाल देना, ठीक है, and you all can face it here. Okay, you all can use that also, and you all can use a cotton वाला this pad because this is more good, I feel like, to use it. ऐसे पकड़ो and then ऐसे करोगे तो आपका जो भी डस्ट है वो यहाँ पर गिरेगा and it won't fall somewhere here and it won't ruin your makeup. So this is how I use this thing. जब मैं भूल जाती हूँ कि आई मेकअप मैंने सब मेकअप कर लिया और आई मेकअप बच गया and eye makeup literally ruins your makeup soon. So that is the reason you all can use this. So that is how I do it. And another thing is there, आप लोग ऐसे भी use कर सकते हो. That is using a brush. I know नहीं आप लोग सोचोगे ब्रश से कैसे हो सकता है. ये हो सकता है, आप कुछ भी ट्राई करो, सब कुछ होता है. Okay, so what you'll have to do is you'll have to hold it like this and आप ऐसे कर सकते हो just the way I'm doing it. See, I don't know if you all can see this. So this is how you all can do it. And another thing is कि आप लोग करते करते आपके आई इस पे बहुत गंद आ जाती है, थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है. So what you all can do is you all can use this. जो जिससे आप कान क्लीन करते हो, योर ईयर्स यू क्लीन इट. सो ऑलवेज यूज़ दिस एंड नॉट योर फिंगर कभी यूज़ मत करना आपके मेकअप होने के बाद में. सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज़ आई यूज़ मिरर ना वरना मैं मेरे आँखों में डाल दूँगी.
So y'all can do it like this and remove all the dot. एंड अगर आपका आई लाइनर भी ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो गया, जो कि होता है ऑलवेज, एंड व्हाट यू कैन डू इज़ थोड़ा सा इसको वेट कर देना, गीला कर देना इसको, एंड जहाँ से भी आपको लग रहा है कि ज़्यादा ये हो गया तो आप वहाँ से इसे उसको निकाल देना विद द हेल्प ऑफ दिस, सो दैट इट कैन बी वो क्लीन भी हो जाएगा और आपका जो आई लाइनर आपने जो लगाया है वो फैलेगा नहीं. सो आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन यूज़ योर आई पाई. So I'm going to show you how to use your eyeshadow palette as your eyeliner. All you need is this brush. ये जो लिपस्टिक का ब्रश होता है, I'm going to use that brush because मेरे पास eyeliner brush नहीं है. So I'm going to use this only. So you all have to do is one thing, that is concealer. आपके पास कौन सा भी कंसीलर है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. और आपको उसको eyeliner की तरह लगाना है. बड़ा डर लगता है मेरे को आईलाइनर लगाने के. कैन यू सी मैंने कंसीलर तो लगा लिया है अभी. सो लेट इट गेट ड्राई, थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए. कौन सा भी शेड जो आपको पसंद है, एनी शेड विच एवर यू लाइक, बट आई एम टेकिंग दिस पिंक बिकॉज आई लाइक पिंक कलर. थोड़ा सा अच्छा डार्क ले लो पिंक. अप्लाई ओवर इट. Can you see? I hope कैमरा जस्टिस करे मेरे मेकअप हैक्स को लेके, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ यू ऑल कैन सी दैट प्रॉपरली. जितने कलर्स आपके आई शेडो में उतने कलर के आपके पास आईलाइनर भी आ गए. आई डू दिस फॉर माई अदर आई एंड लेट्स सी हाउ डज. दिस इज हाउ आई यूज माई आई शेडो पैलेट एज माई eyeliner. Now I'm going to show you how to make your eyes look more bright. So now you need is again this. You need it. तो आप इसको ऐसे करना है. Okay, just do it like this and then आप slowly इधर कोने में, can you see? So this looks little bright. If you don't have birds with you, so you can also use your brush. जो ब्रश आप यूज़ करते हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट सी दैट ब्रश का जो पीछे वाला पॉइंट है, जो कि ये पॉइंट है, विद दिस यू ऑल कैन ऑल्सो यूज़ दैट. आप बस उसको भी ऐसे ये करो ऐसे, एंड देन जो उसका लास्ट बच जाता है वो आप उसके साथ भी ऐसे कर सकते हो. इवन दैट कैन बी यूज. इससे क्या होता है आपके आईज है ना अच्छे लगते हैं. इट लुक्स मोर ब्राइट एंड दैट सी. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट. लेट्स अप्लाई मस्कारा. Now I want to show you one more thing, that is kajal wala hack, and I guess most of the people know this. I don't really need to show you guys, like कुछ magic नहीं है बस okay है. So this is the kajal, okay, but what I'm gonna do is I'm gonna apply here. So always hold this like this and then apply. मैं कैमरा में देख के कर रही हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट इट्स रियली वेरी इजी. सो कंटिन्यू द सेम थिंग द अदर साइड ऑल्सो. आई एम सॉरी इफ़ आई एम लुकिंग वेरी फनी, पर करना पड़ता है आप लोगों के लिए. तो अगेन पानी आ रहा है मेरे आँखों से, सो आई जस्ट yeah. So this is how think y'all can also try it. So there is this hack, one more hack of lipstick. I never used this before and I never did this before, so I was just going to Pinterest and I found this hack and I was so much
in shock because crayon can turn into lipstick. I never thought this, so I thought why not try with you guys, so that because I was doing makeup hacks today, so I thought like let's do and try it with you all. So what I did is I took this color, okay, so मैंने इसको मेल्ट किया है और इसको आपको मेल्ट करके ऑयल में मिक्स करना है. ट्राई नहीं किया है यू गाइज, ऑनेस्टली नहीं किया है ट्राई. आई एम ट्राइंग विद यू ऑल. सी ओ माई गॉड, आर यू सीरियस? आप कोकोनट ऑयल या कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, कुछ ये नहीं है. What? What the hell? This worked? God, I really can't believe this, you guys. Just see this color. Because इसमें oil डाला है, so that oil thing is there, and it's kind of like baby lip balm and all something. I'll use it. वैसे feel आ रहा है lips पे, and it's amazing. I love this hack. I'm gonna try this with other colors too. My mom is gonna shout at me if she sees me doing these things. It's okay. That I wanted to share with you guys, and I'm really happy that कि मैंने ये सब आपके साथ share किया. And I'm really happy for one more thing, that is you guys are showing interest on my videos. Y'all are DMing me on my Instagram and also in the comment section. So please keep doing it so that I can make more and more contents for you guys. That was it for today's video, and I hope you enjoyed this video. And if you did, you don't forget to like, share and subscribe to my channel as much as you can. Please share it, and see you in the next video. Till then, take care, bye bye, stay safe, stay home and stay hydrated.